Hello guys, from this video we are starting with the new unit that is Genetic and Evolution. In this unit there are three chapters. First of all, Principle of Inheritance and Variation, in which we will discuss about Mendel's and principle. Second is the molecular basis of inheritance, and the third one is the evolution. So let us start with the first genetic principle of inheritance and variation. जेनेटिक्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहली बात आती है फादर ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज़ ग्रेगर जॉन मेंडल. ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे. मेंडल वाज बॉर्न ऑन 22 जुलाई 1822 और 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस था उनका पाइजम सैटिवम, मतलब जो हम पी को कहते हैं पाइजम सैटिवम. 7 साल का वर्क था उनका पी प्लांट पर और उनका डेथ ईयर था 1884. बट टिल ही डाइड हिज वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, but after 16 years of death in 1900, the three scientists whose name is Hugo de Vries, Correns and Senmark, they rediscovered his work and then he got his recognition for his work on Pisum sativum. ये जो थ्री साइंटिस्ट थे वे मेंडल के डेथ के 16 साल के बाद उन्होंने उनके वर्क को रीडिस्कवर्ड किया और फिर उन्होंने उनके वर्क को पहचान दिलाया जो उन्होंने पी प्लांट पर की थी. एंड मेंडल वॉज नॉट अ बायोलॉजिस्ट, ही वॉज ए मैथमेटिशियन एंड ही वॉज असाइंड एज अ जॉब ऑफ ए प्रिस्ट इन अ चर्च. सो द रीज़न वाई मेंडल्स वर्क वेयर unrecognized for such a long period of time, there were three important reasons for that. Number one is that the work was not published properly. It was not globally published in that time. उनका वर्क जो है सही तरीके से पब्लिश्ड उस समय नहीं हो पाया था. Second one is the biologist did not accept the work properly. Because he was a mathematician, biologists were not able to comprehend this concept that a mathematician is explaining us a biological process. बायोलॉजिस्ट जो हैं उनके वर्क को प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो एक मैथमेटिशियन थे और बायोलॉजिस्ट जो है उन्हें उनके कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे थे. तो कि ये एक मैथमेटिशियन है और ये हमें बायोलॉजिकल प्रोसेस को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं. Third one is the factor, in which Mendel was talking about the factor which we now know as a gene. People were not able to understand how these units are being passed on because at that time people have no idea how this gene passed on and how this DNA passed on. Only imaginary they are thinking about them. उस टाइम लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं था जीन के बारे में कि ये जो फैक्टर्स है या जीन है वो यूनिट एक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए उस समय इस चीज़ का नॉलेज किसी को भी नहीं था. दिस इज़ द ओनली रीज़न so that the Mendel's work were non-recognized at that time. Now later on, Mendel works got recognition as we have discussed earlier that three scientists Hugo de Vries, Correns and Senmark, they rediscovered his work and then he got his recognition. Now there is a reason why his work was taken in a very nice manner and till day we are following the same principles. Now we are talking of reasons for Mendel's success. Reason first is he selected the contrasting character in pea plant. If we talk of particular character, we will take a character of height. अगर हम प्लांट में हाइट का कैरेक्टर को हम लेते हैं तो एक प्लांट हम टॉल रखेंगे और दूसरा प्लांट हम शॉर्ट या ड्वार्फ रखेंगे. और अगर हम कलर के केस में कैरेक्टर लेते हैं तो पर्पल कलर अगर लेते हैं तो एक कलर होगा लाइट कलर लेंगे और दूसरा डार्क कलर पर्पल का लेंगे. सेकेंड वन इज़ द लार्ज सैम्पल साइज, दैट मीन्स
number of case study is always very big. Another important reason for his success is the data analysis. All the data he had was analyzed in a very systematic manner using mathematical rules. As we have said that he was a mathematician. Fourth character of Mendel's success was that none of these 7 characters are showing linked gene. So there was no reference or no use of linkage. Now let us talk about why Mendel chose pea plant. Reason for selecting Pisum sativum or pea plant. First reason is a pea plant complete its life cycle in about 3 to 4 weeks. Second one is the pea plant shows self as well as cross fertilization. Third one is pea plant also shows contrasting character. There are 7 contrasting character to which Mendel selected. We will also see which particular traits or which particular expression is dominant or is recessive. So we will see in this chart that stem height is the character and the tall is the dominant. Tall plant is the dominant and the dwarf plant is the recessive character. Second one is the flower color, in which the violet color is the dominant and the white is the recessive. Flower position, in the flower position, axil is the dominant and the terminal is the recessive. Pod shape, inflated is the dominant and constricted is the recessive. In pod color, green is the dominant and the yellow is the recessive. Fourth reason is that the seed do not show dormancy. It means as soon as the seeds are formed, they germinate. मतलब जैसे ही सीड का निर्माण होता है उसी तरह वो जर्मिनेट भी करने लगते हैं. तो एज वी नो दैट द डॉर्मेंसी इट इज़ द पीरियड. डॉर्मेंसी क्या होता है? ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें कि कितना भी फेवरेबल कंडीशन दिया जाए वो सीड कभी भी जर्मिनेट नहीं करता है. लेकिन इस सीड में है ये डॉर्मेंसी को शो नहीं करता है. ये जब भी जैसे ही सीड फॉर्मेशन होता है ये जर्मिनेशन भी होने लगता है इसमें. डॉर्मेंसी इज़ द पीरियड in which, in spite of giving all the favorable condition, the seeds are still not. Fifth reason is the number of seed is more. Number of seeds production per generation or per plant is more, so that we can get a bigger sample size in pea plant. So these all are the only reason why Mendel chose the pea plant only. सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.